directors and deans, HODs, entrepreneurs, the faculty, students of SCOST K and FPOs who had been trained last year. Last year, we had 66 skill programs for entrepreneurship which were granted by the Ministry of the Micro, Small, Medium Enterprises to SCOST. Keeping in view the track record of the university for imparting the entrepreneurship skills, which we last year imparted only in the Kashmir division, and the 24 success stories which we got from the entrepreneurship in different sectors of floriculture, agriculture, horticulture, dairy sector, food processing, and the advanced training programs which were given to the existing business owners, CS stores, food processing, those who are dealing with the growing of the farm crops. Keeping that in view, the success stories, everything by the ministry, this year they granted us the 550 skill development programs for different faculties. And the highest proposals came from the Faculty of Horticulture, followed by the Directorate of Extension, and at the third position is Faculty of Agriculture. So they got the maximum programs, and we had this year submitted 643 proposals, out of which 550 proposals were sanctioned, and Advanced MDP and Advanced ESDP, these are the two courses in which we got 20, though we had submitted some 86 proposals, because there is a lot of competition with IITs, with IIMs, the other central universities. But getting 20, no IIM, no IIT, no other university has got 20 advanced programs. Here I want to give you a slight information about these programs. The budget which has been granted for these programs, if the programs are to be kept residential, you will get the 100%. That means if you have 10 lakh, you will get 10 lakh. But if the program is non-residential, then there will be a 50% cut. So since we have good facilities of hostels, so I will request all the coordinators, they should keep these programs residential. The advanced MDP programs, as you know, we have to train in them our own graduates, the graduates from other universities, the MBAs. They are to be skilled. We have an advanced program for them for entrepreneurship. As far as the ESDP is concerned, advanced ESDP is concerned, for the advanced ESDP, we have to keep in mind that we have to train those people who are already in business. For example, there is a person who is dealing with the food processing. Let us say till today he is making only the beverages. Then we have to give him an advanced kit for the beverages, what advanced packaging can be here, and focus. I request all the coordinates here, the focus should be on that the training to the entrepreneurs, you should involve the people from the industry. People from the existing industry within Kashmir, outside the Kashmir, wherever we will get. If you put in the academics, kindly keep it 50-50, 50% let there be from the academics, and 50% the people who will train these employers from the industry. Now, as all those programs which we conducted last year is available on the YouTube. They were online. There is MSME SCOST
If you click, you will get all those programs last year which we had done on YouTube, and this year all these advanced programs especially are to be linked on the YouTube. And now keeping this year the program, we have been given the task that we are not to do the program only, never think that Sukhas Kashmir as a mandate of only Kashmir and Ladakh. I have been asked by the ministry that they should be conducted all over Jammu, Kashmir and Ladakh regions. So coordinators are free to choose the locations to conduct the programs in Jammu, Kashmir as well as Ladakh. So then these are, I have been, as far as the programs are concerned, like you can see the qualification. Qualifications start from 8th class. 8th class to any, there is no limit then. You can go even if a PhD person is there, and never the focus is not that only we can train our own students. We are basically, these programs are given for anybody outside. You can conduct them in coordination with the degree colleges, with panchayats, with higher secondaries, all over across the J&K and Ladakh. So this is the list, 266 for the faculty of horticulture, and let's have a big clap for them. Followed by Directorate of Extension, 111. But there is one faculty who are having a similar type of the faculty, but I don't know why the lowest is there. So this was all kindly start program from tomorrow, and finish it. We have 550 is a big chunk which we have to complete within 3 months. Thank you very much. Thank you, sir, for providing us with insights about the program. This ceremony is a testament to the belief that we can build a better future by empowering our people with the skills they need to thrive. It is a recognition of the fact that entrepreneurship is the engine of economic growth and a force for positive change in our communities. I request all the dignitaries on the stage to release the book on MSME Trainings 2023 to 2024. आप साइड में रहिए, साइड में रहिए, साइड में। It is indeed an auspicious moment. Thank you, sir. Thank you, everyone. As we move ahead with the event, we celebrate the entrepreneurs amongst us who have embarked on the journey of creating business, startups, and ventures. Your vision, courage, and resilience are the driving forces behind innovation and progress. I humbly request our dignitaries to launch our very own Scotch-K startup, Green Foods Innovation Private Limited, founded by our very own faculty, Dr. Saima Iqbal, incubated under SKIIE Center, Scotch-K. The journey of the startup has begun with a product, Noon Le, a traditional Kashmiri instant noon chai. In a world where our lives are busier than ever, Noon Le brings you the magic of Kashmiri noon chai in a convenient bag. It's a testament to our commitment to preserving tradition while making it accessible to modern lifestyles. Thank you, dear. I would just मैं अभी बोलूँगा इसके बाद में कि हमने एक नया कल्चर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में शुरू किया वो है अबाउट स्टार्टअप्स. लेकिन आज जो एक स्टार्टअप यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं वो कश्मीर के एतबार से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. आपको पता है कि कश्मीरी लोग नून चाय पीने के बड़े ही शौकीन हैं और जब हम नून चाय बनाते हैं कश्मीर में तो गैस या
उस हीटर पे जो अब शायद बहुत ही नायाब होगा जब से ये हमारे इलेक्ट्रिक मीटर लग जाएंगे, तो कम से कम 3-4 घंटे तक हम अपने उस नून चाय को उबालते रहते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि उस नून चाय के एक कप के पीछे कितनी सारी एनर्जी जाती है, हाउ मच ऑफ एनर्जी वी आर स्पेंडिंग, और कितना गैस। और आपको याद होगा कि एक बार हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि यार कशीर पर ऐसे नहीं पे हर तरह से बिजली आगे के दुनून चाहे ऐसे इस कशीर में चावा, तो वो अपना थोड़ा इस लैंग्वेज में बोलता है। तो आज हमारे सामने एक फैकल्टी है डॉक्टर साइमा, जो एक कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रही है। तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई इसका हम कौन सा एक इनोवेटिव एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने एक नून चाय को एक टिप चाय की तरह बना लिया। तो अब हमें नून चाय को उबालने की जरूरत नहीं होगी, और वो जो एनर्जी जो गैस खर्च करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। और जब से ये हमको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मीटरिंग शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली लोग कश्मीर में इसलिए परेशान थे कि नून चाय का क्या होगा, अगर मीटर लग गया तो नून चाय हम कैसे बनाएंगे। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो मीटर भी लगवा दे और हमारी नून चाय भी पी ले। तो और आज का जो है ना ये मौका है, ये हमने चुन के आज जो इस मौके पे हमने सोचा इसको रिलीज करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब विक्रमजीत सिंह साहब हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को हेड कर रहे हैं। और उनका ही एंडेवर ये है कि हम जम्मू कश्मीर में ये जो बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप हम कैसे कॉमन करें। तो सर ये ऑनर सर हम चाहते हैं कि आपसे हो जाए, और ये प्रोडक्ट कुछ दिनों में हमारे स्टोर्स पे आ जाए, और हमें जो भी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और लोग वहां पे जाएं, नून चाय खरीदने नहीं, लेकिन नूनले चाय खरीदने जो टिप की तरह पानी में आप उसको डाल दो और आपको वही टेस्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई इसमें केमिकल चीज नहीं है, वो आपको पीने को मिल जाए। और बाहर चाहे वो कश्मीर में रह के नून चाय पिएंगे, कश्मीर से बाहर। मैं आपको सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम अभी हज पे गए थे, तो घर वालों ने बोला मुझे नून चाय भी साथ में ले लो। अब मसला था कि नून चाय तो साथ में ले वापस ले आए, क्योंकि वहां पे उसको उबालना था उतना ज्यादा। तो सोचा यार समय तो है, हमें हमारे इतना समय है ही नहीं कि हम नून चाय को उबालें, तो वो वापस चाय हमने वापस ही लाई। लेकिन अगर अगली बार कोई जाना चाहे तो अब वो वाली नून चाय नहीं देगा, वो ये वाली नून देगा। बहुत बहुत मुबारक। और जो खास बात मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कश्मीर में हमारे बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कश्मीर में जो हमने बनाए हैं, एक थोड़ी सी डेफिशिएंसी हमें लग रही है अपने लोगों में कि जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग में भी हमारा कॉम्प्रोमाइज है, भी हम सीखे नहीं कि अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में कैसे उतारें। तो मैं साहिबा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो इसकी पैकेजिंग में देख रहा हूँ किसी इंटरनेशनल पैकेजिंग से कम नहीं है। तो आप जोरदार तालियों से साहिबा को मुबारकबाद देंगे। हाथ पर रखते ये थोड़ा सा Congratulations, ma'am, and congratulations to the whole fraternity of Scouts Kashmir. And as rightly said, that Noon Chai is not just a tea, it's an emotion. Let's have a look on first promotional video of Lonely.
प्रमोशन का मुझे ठीक लगा, लेकिन इसमें पीछे से एक बहुत ही वाइब्रेंट म्यूजिक होना चाहिए, है ना, साउंड होना चाहिए, वाइब्रेंट साउंड, because noon chai is not just any kind of a beverage, it is part of our culture, our tradition, our heritage. Nowhere in the world people take tea with salt. We are the only people in the world who take, है ना. So thank you for promoting this culture of our local culture. Thank you for that. Thank you, sir. We are proud to witness rise of various startups as a result of the trainings conducted last year. And these startups are a live example of start where you are, use what you have, and do what you can. I would request our startups to represent remarks on their journey, starting with Mr. Nazir Ahmed Kode, Tribal President of Kashmir Youth. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर साहब, हारून साहब और जिनके खासकर हमारे डीसी साहब, नज़ीर साहब, बाकी हमारे जितने भी मेहमान आए हैं जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, मालूम चाहता हूँ सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इंटरनेशनल गुज्जर और बकरवाल स्टेट यूथ प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद कोर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। पिछले 2 साल से हम इस कास्ट के साथ जुड़े हैं और खासकर अपने जो हमारे गुज्जर और बकरवाल तबका है, ये हर कोई जानता है कि बहुत पसंदीदा तबका है, एजुकेशन से पीछे है, बाकी हर फैसिलिटी से पीछे है। जो कदम यहाँ से कास्ट की तरफ से उठाया गया कि ट्राइबल लोगों को आगे लाएं हम, और वो भी कुछ करके दिखाएं, लेकिन शुक्र करते हैं हम कि पिछली बार जो हमने कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल के बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई सर, 7 दिन, 14 दिन और 42 दिन की। उसके बाद सर हमारे को कुछ, क्योंकि हम तो पहाड़ी लोग हैं, हम ज्यादा आलू और राजमा कमाते हैं, तो हमारे को बोला आपको यहाँ गंटनियां मिलेगी और ये आज आपकी जो खेत है वो बहुत अच्छी खेत है और उसमें आप ये कमाओगे। और कुछ थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर नासिर साहब ने और हारून साहब ने हमारे साथ जब हमारे को दिए शुरू करने के लिए, तो हमने हमारे अभी 5 ग्रुप्स चल रहे हैं जिनमें हमारे को यहाँ से ग्रीन हाउस और वो गंटनियां मिली थी, जिसमें कि एक हमारा चल रहा है बांडीपुरा में, और एक चल रहा है हमारा फकीर गुजरी में और टंगार में, एक हंदवारा में, और दूसरा हमारा चल रहा है यहाँ पर अनंतनाग में। तो अभी हमें उसको शुरू करने के लिए हमें बताया था कि आपको इसके ऊपर और आपको कुछ आगे जाके पैसे मिलेंगे, जिसमें हम अपनी यूथ को, अपने गरीब लोगों को उसके साथ जोड़ें जो करना चाहते हैं। हमारे लोग वैसे भी करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जमीन सतह जो है जमीन की अच्छी है, हमारे पास खाद ढूंढने के लिए ज्यादा जरूरत हमारे को नहीं पड़ती है जो हम बैकवर्ड इलाके में रहते हैं सर, क्योंकि हम ज्यादा जमीनों में गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं और हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम इसको आगे लेके जाएं। लेकिन सर हमने बहुत बार यहाँ आए थे, हारून साहब के पास भी आए थे, अपने डॉक्टर नासिर साहब के पास भी आए थे, तो हमें को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे को इसका आगे शुरू करने के लिए इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएं। जो ये हमारे बच्चे ये 3-4 ग्रुप में चला रहे हैं, इनको हमारे को पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हम इसको आगे शुरू करते हैं, आगे लेके कहीं जाते हैं और भी बच्चे हम जोड़ते हैं, तो इसके लिए पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही है सर। तो सर इस मंच से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उन गुज्जर और बकरवाल तबके की तरफ से सर, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें अगर हमारे को थोड़ा पैसा मिले और इसको हम आगे और तब्दीली इसमें ला सकते हैं। हम अपने ट्राइबल के बच्चों को, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, वो कहीं के भी हैं, जिनमें बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं सर, वो कास्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं सर, और वो अपना रोजगार खुद कमाना चाहते हैं सर। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे सर, प्लीज कि अभी जो ये बोल रहे हैं, इसमें कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये डेवलप करते हैं? We want
listen from the audience if there we have some kind of an entrepreneur who has been trained, जिसको इस यूनिवर्सिटी ने ट्रेन किया, अगर वो बताए, डिमांड पे आपकी बात आगे जरूर वो आगे रहती है ना, आप वो बताए ना, आप उस पर ठीक है, आप बताएं। शुक्रिया सर, थैंक यू। Thank you, sir. May I now request Mr. Harun and Mr. Mubashir from Commercial Floriculture Startup, who have initiated startup of high-valued ornamentals, for their remarks. Honorable Vice Chancellor, respected Chief Guest and other dignitaries, a very warm good morning and Assalamu alaikum to everyone. Myself Harun Nazir and I'm from Badgaon. Last year we attended a training program in the division of floriculture which was supported by the MSME, and the topic was entrepreneurship strategies for nursery raising and bulk production of different ornamental crops. It was a 6-week long training program. So फिर उससे encourage होके we initiated a startup. We are 2 candidates, Mubashir and me from Badgaon. We initiated a startup, and what we did, we started propagating the high value ornamental crops like we have magnolias and different varieties of maples. And alhamdulillah we are going fine. And now our aim is to expand this startup, and by the end of this year only we aim to set up an oil extraction from distillation unit. And for that, we hope that with your support and support from MSME, some incentives from the MSME, will take this startup to new heights and make a significant impact in the field of sustainable floriculture. Thank you. Thank you, Mr. Harun. We wish you a successful journey. I now request Dr. Sajadul Akbar, who is again a startup, if he is here for his remarks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and a very good morning. Actually, I'm the alumni of this university, Sukast. Basically the veterinarian. My work has been on the migratory birds, their just anatomy and the parasitical and bacterial load. It was till 2020. So, uske baad, when I just attended the MSME in collaboration with the Sukast case, some trainings on the entrepreneur. I changed my mind. I left my job in Indore. या उर्दू या कश्मीर में बोल रहा जी सर, तो मैंने फिर अपनी जॉब भी छोड़ी, जिसको बोलते हैं कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार। तो मैं चेंज हुआ नहीं, तो इंदौर जो है इट इज अ बिजनेस हब, जिसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम आईके कॉलेज। तो मैं यहाँ आके 2-3 ट्रेनिंगें मैंने फर्स्ट जो अटेंड की थी एडवांस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें था कि हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एप्पल एंड सैफरन। Basically, I belong to the Chandhara, the 17th century Haba Khatun belong to that very village, और वहाँ पे सैफरान जो है हमारी मेन इनकम थी। लेकिन अब जो है वो जो बिरला इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम गालंदर टू लतपोरा जो वो पैच है, अब वही सैफरान हम उसको मतलब उसको बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 80%। तो मैंने माइंड बनाया इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करके, और एक और ट्रेनिंग थी डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एग्री स्टार्टअप्स, और एक और थी ब्रांडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर मार्केट वैल्यूराइजेशन। तो सर मैंने अपना माइंड चेंज किया। माय वाइफ हैज बीन द एमएड एंड एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने उनको बताया कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिजनेस किया था कि जो खदीजा द कुबरा थी, शी वाज डूइंग द मैनेजमेंट, शी वाज डूइंग द इसको बोलते हैं कि पूरा कि कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, और मार्केटिंग के लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे दूसरे शहरों में। तो आई चेंज माय माइंड, वी बोथ वाइफ एंड हस्बैंड हमने एक नया स्टार्टअप किया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो ट्रेनिंग हमने की इसमें हमने एक नया हमने फॉर्मुलेशन बनाया है जिसको तलबीना कहते हैं।
तो तलबीना जो कि सुन्नत भी है, सेहत के लिए भी है, तो हमने उसको जो है सैफरान एग जो है, सैफरान को उसको हमने ऐड किया। मिलेट्स, चूंकि G20 जो था हमारा थीम भी मिलेट्स था हमारे देश का, तो हमने इन्हीं मिलेट्स को ग्राइंड करके एट द होम, और हमने उसमें सैफरान भी ऐड किया, और वो हमने लॉन्च किया, स्टार्टअप हमने किया। और दूसरा हमने जो यहाँ का जो सैफरान जो है, सैफरान का अतर हमने एक्सट्रैक्ट किया, और उसमें हमने जो यहाँ पे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा बिनहामा जो हमारा वहाँ पे बिनहामा में हमारा जो सुकास का एक सेंटर है, वहां से मैंने ऑयल लिया और मैंने सैफरान का जो एक्सट्रैक्ट है उसको भी मिला के मैंने एक स्टार्टअप किया है, गार्निया परफ्यूम। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एक दो, तो मैंने ज्यादातर मैंने मुझे लग रहा है 500 से प्लस मैंने वही छोटी छोटी मैंने शीशों में वो जो परफ्यूम है वो मैंने सेल आउट किया, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला। तो एट लास्ट आई एम थैंकफुल द सुकास्ट के एंड स्पेशली आवर विजनरी वाइस चांसलर साहब, जिन्होंने मुझे भी मतलब थपथपाया कि कहा आप आइए, आप स्टार्टअप करिए, और आप जो है खुद के लिए नौकरी मत ढूंढिए, आप कल 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। आई एम स्पेशल थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, तो वो जो चाइनीज कहावत है कि आप क्रॉप्स को ग्रो करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप डिकेड के लिए ग्रो करना चाहते हैं तो आप ट्री लगाएं। और मैं कहता हूं कि अगर हमें 100 इयर्स के लिए ग्रो करना है, कश्मीर को ग्रो करना है, तो वी शुड हैव जस्ट लाइक द विजनरी लीडर्स प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब। थैंक यू वेरी मच। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं क्योंकि मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। मल्ला यशकुरुन्नासा फला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होगा वो रियल में गॉड का शुक्रगुजार नहीं होगा। तो मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सुकास्ट के और खुसूसन हमारे अलाल बंद साहब जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, हमारे आदरणीय जो विक्रमी जी सर जी आए हैं इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे लग रहा है यहाँ आके ही मेरे बच्चे दो हैं, एहसान इलाही एंड इनाम इलाही, उनका नाम वो नींद में भी बोलते हैं सुकास्ट के, बाबा आप सुकास्ट के जाओगे। उनका आज एग्जाम था, वो भी आने वाले, मैंने कहा बेटा आप एग्जाम दो, दे आर इन द वे, मुझे फोन आ रहा था कि हम भी आ रहे हैं सुकास्ट के। तो एक उसको बोलते हैं कि वो ख्वाब में भी रात में भी बोलते हैं सुकास्ट के, तो इसका मतलब है कि सुकास्ट ये जो है यहाँ की पहचान बन रही है इन द फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. We wish you all the success for your journey. May I now invite Mr. Moeed Naski, who also happens to be an entrepreneur. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Greetings to all distinguished chief guests and respected vice chancellor. My name is Moeed Ahmed Naski, and I have started a dairy farm recently 6 months ago, and cost has been a pivotal and I should say a cornerstone in our farm. I stand before you today as a progressive dairy farmer, proud to share our journey, farm's growth and sustainability. बच्चे आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड में बताओ कि आपने कहाँ पढ़ा है और आप यहाँ कैसे आए। थोड़ा सा और उर्दू में बोलोगे तो मेरे यहाँ सामने अपने भाई हैं यहाँ पे जो उर्दू या कश्मीरी समझेंगे, थोड़ा सा बोलो। I have done my masters in civil engineering from Thapar Institute of Technology, Patiala, and then I moved to Australia for PhD studies, and due to some reasons I returned back, and I had some interest in developing our community. I wanted to do something practical in life. Seeing my friends and other people going to IAS and KS, and they were motivated to do something for the society. So the basic intention of this farm or setting up a startup is to do something for the society. Currently, we are having 4 employees from just 1 employee in the beginning, and now we are moving towards vermicompost as well, which is enhancing our economics as well as we are improving our soil. Moreover, what we have done is we have utilized precision diet formulation like I told you last time. So by that we have reduced our feed and fodder shortages, wastage,
And as far as other entrepreneurs are concerned, we utilize to get an appropriate image of our economic indicators, we utilize life cycle cost analysis. That way, we have been successful in getting a proper picture of our farm and its economics. Moreover, we have been collaborating with other institutions as well, like IIT Roorkee. We are collaborating with them to research and develop a biogas plant that could perform in winter months as well. Furthermore, we have been thankful to SCOS, to KVK Gandarbal and MSME training programs, which have helped us to further our reach to the experts of the field, where we have been able to interact with them and have some useful brainstorming sessions where we can address our issues that we are having in the field and the practicality or the application of. ये आप बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, मतलब आपने कितना स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचे थोड़ा सा? जी, हमारे पास 16,000 है इस वक्त, and what we are doing, we are directly delivering our milk to our customers. So one of the most जो इस सारी खतर मतलब the most positive feedback, leave alone economics, matlab the review that we get from our customers, they are like their children never used to drink milk now. Doctor ne band kiya tha. Now our customers are like they are enjoying it and they are not taking any supplementary this what you say additives in the milk to just taste it better. अगर हमें कभी मिल्क शॉर्टेज होती है, like we tell our customers we cannot deliver this amount of milk, तब वो ऐसे क्यों गस्सा कि हम बच्चों को क्या देंगे? So this is a satisfaction that we are really helping our community, and plus जो मेरे पास workers है, we are trying to work in a team-based environment. हमारा जो काम होता है, it's divided in such a way कि main employees is बड़ी हुआ, they were like कि dairy farm पे हम काम नहीं करेंगे यार. चलो बच्चे बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय कम है, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं आपको इसलिए जी सर. तो मैं आप ऑडियंस से इसलिए मुझे इसके कुछ शब्द मुझे अच्छे लगे, शायद आप लोगों ने वो पिकअप किया होगा. Besides what he has said, इसने कहा कि मैं एमटेक भी हूँ और पीएचडी किया था, जब वापस भी आकर सोचे मैं वापस जाऊँ and I do something for the society. मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ. यहाँ हम जितने भी इस हाल में बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, ज्यादातर हम लोगों में एक सेल्फ है. मैं अपने लिए क्या करूँ, मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, मैं कौन सी सब्सिडी सरकार से ले लूँ, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा है ना, मेरी फैमिली का. लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल यहाँ पे किए कि मैं सोसाइटी के लिए क्या करूँ, तो इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां. Thank you, Mr. Moik. You are the pioneers of change, and your entrepreneurial spirits will drive our economy forward. I now request Mr. Sahid Alakaban, Nodal Officer, MSME Kashmir, Government of India, to address the gathering. In the name of Allah, most gracious, most merciful, peace and blessings be on our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Worthy Chief Guest of the occasion, Sheikh Bikramji sir, Commissioner Secretary of Commerce, Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Saab, Professor Harun Malik, the other dignitaries on the dais. I'm very sorry I couldn't remember the name, Director of Finance and Director Dean, Students and Academic Welfare. Today is the second time. Last year I was here. I had a lot of things to say, but now I will say that university has done a lot in this. I was almost not of this opinion last year, to be very honest. When we were granted 66 number of programs, I said, okay, they will get it done. But today, this is really a leap. Let me call this Sher Kashmir University of Science, Technology and Entrepreneurship. It's first time, to be very honest and frank, that I have seen a culture, in particular in J&K, with which SCOS is leading ahead.
I went to Singapore in 2016. I saw a different mindset altogether of the people. Different mindset. A person was given an award, a business excellence award. He was a port chief area manager of the port. He was given the business excellence award, and he said, "Sir, I am receiving the award, but I still have 50, 60 number of loopholes in my port. I try to recognize them, get them corrected, then I will come and take the award." What the हमारा सोच है कि हमें award मिलता हम ही है. So that sort of culture. One of the person there was basically a school principal. His school was the world's greatest school, world's leading school. He said, "I joined 3 years back, and it was not world leading school." Then I thought, what to change? I thought to change infrastructure, build better facilities, and lastly I thought it's the manpower which will drive the force. I am highly congratulations to all the basically esteemed faculty of the SCOS and under the leadership of Honorable Vice Chancellor. Only few things, because our chief guest is very having high engagement, lot of engagements. I am highly thankful sir has dedicated time for this particular event. But only two things I will just say. We start the journey of entrepreneurship, but we don't reach the level we have to reach. कहीं ना कहीं अभी हमें कुछ ना कुछ कमी है. जिनसे आपने यहाँ सुना, ये अपने फील्ड्स के मास्टर्स हैं. They are fields in their science and technology and agriculture, but business domain is next domain. How to change this business into an MNC? How to make it a unicorn company? This is what we need to learn. जो आपका अभी basically नून ले यहाँ launch हुआ. मैं ये कहता हूँ कि नून ले launch होने से पहले नून ले का trademark हुआ होना चाहिए. I don't know whether she has applied. Recently, in a function, I met a guy. He is into the bakery business. He has started bakery. ऐसी bakery start की है और bakery ऐसी चली कि he has 7-8 stores in the valley right now in different districts. Now his name is particular ABC name. I told him whether you have registered in the trademark or not. Oh sir, I have all the registrations, but trademark I don't have. Must you need to have a trademark? Oh sir, how that will help? Because nobody else can copy your name within India at least. Once I started to registering this trademark, I saw the names already existing in the south. This is such a setback. You are not basically building yourself. You are building a name by the name Noonlay. 6 years down the line, when you have grasped the market in the Kashmir, somebody in the Mumbai realizes this has a potential market and you can go to different places and you will launch the same brand by the same name. And you cannot sue him because you don't have trademark registrations. So different things, different aspects need to come in play. Kindly, जो आप business start कर रहे हैं, अगर आप science technology से field हैं, ये science technology का college है, but you need to take inputs from the business world as well, so that you can grow your business to the next domain. Thankfully, I thank all of you, and I'm highly thankful to Professor Naik for getting these 550 programs, and this will surely change. And second, humble request, you have around, I suppose, 50 MDB programs. So MDB and advanced MDB programs in the ministry are generally for the entrepreneurs or the staff or the staff members of the factories. I would kindly request, because last time we called in ये हो गया था, there are so many CS stores which don't have capacity buildings. It will be mighty impactful if you will utilize these MDB programs in the CS stores of Vasipura. I am sure that they will get their capacity building and they will serve the community better. Thank you. God bless you all. Thank you very much, sir, for your address. We are grateful to have our worthy Vice Chancellor, Professor Nazir Ahmed Ganai, sir, and I am profusely elated to take an opportunity to invite sir onto the dais. Please, sir. थैंक यू डियर. नॉर्मल प्रोटोकॉल में हम कुछ थोड़ी सी चेंज ला रहे हैं. क्या हमारे जो आदरणीय और रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट जनाब विक्रमजीत सिंह साहब हैं, इनके कुछ असाइनमेंट्स हैं, उनको जाना है, और ये हमारी आज की इस महफिल के बहुत ही खास मेहमान हैं. और साथ में हमारे जनाब अब्दुल हमीद वानी साहब जो सेक्रेटरी किसान बोर्ड है, किसान डेवलपमेंट बोर्ड है. हमारे शफात यहिया साहब हैं जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं. मेरे कलीग सिद्दीकी साहब हैं, हारून साहब हैं,
सहील साहब हैं, और आफ्टर डाइस मेरी यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिसर्स, मैं थोड़ा सा काट शाट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो सामने लोग बैठे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री के हमारे डायरेक्टर जनरल जनाब बशीर अहमद साहब हैं, और हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, और नज़ीर अहमद साहब हैं, और यही है जम्मू कश्मीर और सारे मुल्क का इस वक्त चैलेंज कि हम अपनी कम्युनिटीज को आगे चलाएं। एक इरशाद साहब भी थे यहाँ पे, सामने बैठे थे, शायद कहीं एक इरशाद है यहाँ पे, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है और ये मल्टी डायमेंशनल पर्सन है, और हमारे साथ यहाँ बैठे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरी फैकल्टी है, मेरे फैकल्टी के जो वो कोऑर्डिनेटर हैं जो इन प्रोग्राम्स को चलाएंगे, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से जनाब विक्रमजीत सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत कबूल करी और वो यहाँ पे आए। और जब हम विक्रमजीत साहब, जब हम ये सोच रहे थे कि जो 550 प्रोग्राम जब हमने लॉन्च करने हैं, तो we believed to ourselves that it would be you who would be doing these honors for us, because the Department of Industries and Commerce has this endeavor of spreading this kind of मतलब पूरी रियासत में इस तरह का माहौल बनाने का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ पे आए। एक तो ये डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ चेयरमैन हैं जनाब विक्रमजीत साहब, फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो इनके बहुत बड़े असाइनमेंट्स हैं। आपको बहुत शुक्रिया। हबीब साहब जो हमारे यहाँ पे डाइस पर बैठे हैं, सेक्रेटरी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान हैं। अगर एक तो यूनिवर्सिटीज हैं और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा लिंक है जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज को फार्मर्स के साथ कनेक्ट करता है, वो है हमारा किसान बोर्ड, और उस किसान बोर्ड को लीड कर रहे हैं हमारे जनाब अब्दुल हमीद वानी साहब। मेरे ख्याल में आप लोग दूरदर्शन पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सुनते होंगे, उस प्रोग्राम का नाम है ताशनाम यूथ कैरी गोगुट फ्री कैरी कराओ। तो उसमें उनका बड़ा फोकस है कि वो जो सक्सेस स्टोरीज है, फार्मर्स जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, उन सक्सेस स्टोरीज को कैसे कैप्चर करें, और मीडिया के माध्यम से ये बाकी लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि एक फार्मर 2 कनाल 4 कनाल जमीन पे 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। क्योंकि अभी हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो कम जमीन पे हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करके बहुत पैसा कमाते हैं। मैं भी बता दूं सर, एक छोटी सी एग्जांपल, हम अभी यहाँ पे ज़ांस्कार गए थे, तो ज़ांस्कार में एक बहुत दूर दराज इलाका है, उस एक फार्मर था जिसके पास 5 कनाल जमीन है, और 5 कनाल वो पीस मटर कल्टीवेट करता है, और 5 कनाल से वो 5 लाख रुपए ज़ांस्कार में हार्वेस्ट करता है, और उसका टोटल जो सीजन है वो करीब 2 या 2.5 महीने का उसका सीजन है। इसी तरह के जो सक्सेस स्टोरीज हमारे हमीद साहब अपने फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ा इनका रोल है, वो है कि हमारा एक HADP प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे शुरू, उसको भी फार्मर्स तक अवेयर कराने में इनका रोल है। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये अभी मेरे साथ वहाँ पे ज़ियारत पे आए थे, तो हमने जो है ना इकट्ठे ज़ियारत पे थे, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने जो है ना हमें वहाँ पे एक लीडरशिप दी थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ साहिबा जी को, जो डॉक्टर साहिबा जी यहाँ पे अभी उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है नूले चाय का। और अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स देखेंगे, एक तो हम थोड़ा सा एम्बियंस या कन्वीनियंस चाय बनाने को, दूसरा अगर हम ये कल्चर चल गया और अगर ये कंपनी चल गई और लोगों ने नूली चाय बनानी पीनी शुरू करी, तो जम्मू कश्मीर में हम अपने जम्मू कश्मीर की कितनी एनर्जी, कितना पावर का खर्चा बचाएंगे, और उससे हमारा कितना फायदा होगा, मुझे तो लगता है कि ये एस्टिमेट करना बहुत होगा, और उससे काफी फायदा होगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ पे जो हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे बोला, उन्होंने एक नाज़ी साहब थे जो डेयरी फार्म करते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस यूनिवर्सिटी के उन जो स्टूडेंट और फैकल्टी स्टार्टअप्स को, जिन्होंने एक नया कल्चर यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में चालू किया है। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे देश में हमने एक नया चलन यहाँ पे शुरू किया। इस प्रोग्राम को जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, वो है हमारे डॉक्टर हारून साहब। उस हारून साहब ने
इस यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के साथ इंट्रोड्यूस किया। पिछले साल उन्होंने एक चांस दिया कि दैट हमारा एक एंडेवर है, हमारी एक कोशिश है कि हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के अलावा हमारा काम है अपने रूरल यूथ को ट्रेन करने का। तो उन्होंने सोचा कि लेट मी अप्रोच जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उन तक पहुंचने के लिए, ताकि हमें कुछ सपोर्ट करें। तो पिछले साल उन्होंने करीब 66 प्रोग्राम सैंक्शन किए थे, पहली बार हुआ था इस यूनिवर्सिटी में, और उस सक्सेस की वजह से आज उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन से करीब 555 प्रोग्राम हमारी इस यूनिवर्सिटी को सैंक्शन किए। तो ही इज प्लेइंग अ वेरी की रोल, डॉक्टर हारून, in helping this university to reach those rural youth. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं थोड़ा सा कुछ लोग जो मेरे फैकल्टी उनको पता है, लेकिन जो बाहर से हमारे मेहमान हैं और जो हमारे डाइस पे मेहमान हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि पिछले 2-3 सालों से इस यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हम अपने बच्चों का माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे। अब इतने सारे बच्चे इतनी सारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, लेकिन बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं हमारे यहाँ पे। लेकिन हमने सोचा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम को चेंज किया। तो इस यूनिवर्सिटी ने एक माइंडसेट चेंज किया। माइंडसेट में हमने पहला फोकस रखा था कि जो हमारे जो नॉर्मल रेगुलर प्रोग्राम्स हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी प्रोग्राम्स, उसके करिकुलम को हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैसे बनाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को तैयार करेंगे कि वो इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बन जाएंगे या वो एंटरप्रेन्योरियल ग्रेजुएट्स बन जाएंगे। जब वो इस यूनिवर्सिटी से निकले, या तो उनका अपना कोई बिजनेस होना चाहिए या उनका स्किल सेट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हाई एंड इंडस्ट्रीज में उनका एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हमारा एक प्रोग्राम जनाब विक्रम जी साहब यहाँ पे चल रहा है, वो है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम है। उस वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम में हमने ये विजन दिया था कंट्री को कि हम इस तरह का माहौल अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बनाएंगे और हम एक नया एजुकेशनल मॉडल जम्मू कश्मीर में लाएंगे, लेकिन वो वाला मॉडल पूरे देश में जो है ना लागू हो सकता है। मुझे ये बताने में आपको खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में कुछ वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट यहाँ पे आए थे उसी प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि जो हमने आज से 4-5 साल पहले एक अपना विजन दिया था कि हम एक नया माइंडसेट, एक नया बच्चों में जो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन, वो लीडरशिप, वो एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड हम कैसे कल्टीवेट करें, हम उसमें कामयाब हो गए। और वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट यहाँ पे ये अपना रिमार्क देके गए कि वो वर्ल्ड बैंक को, स्क्वाश कश्मीर को एज ए केस स्टडी ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAHP पेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी जब वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे ये होगा कि स्क्वाश कश्मीर ने पहली बार हिंदुस्तान में एक बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड बनाया है। अब इसकी कुछ मिसालें मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं, 20 स्टार्टअप्स आप बच्चों के और फैकल्टी के, और उनमें से 10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। और सबसे बड़ी बात हमारी यूनिवर्सिटी जो फंडामेंटल चेंज लाई इस यूनिवर्सिटी में, हमने कहा कि जो हमारी फैकल्टी है जो ऑन रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वो भी अपना स्टार्टअप बना सकती हैं। तो बेसिकली ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पॉलिसी थी, हमने उसको कस्टमाइज करके अपनी यूनिवर्सिटी में लाया। अब हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे आजकल आपस में कम्पीट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए, हमारे बच्चे आज कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कौन बच्चा दूसरे बच्चे से लीड लेगा एक नया इनोवेटिव आइडिया लाने में। क्योंकि आज हमने शायद उसने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं रखा है, लेकिन देश की ऐसी 66 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वाइस चांसलर्स यहाँ पे आए थे, वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट आए थे। हमने जब अपने बच्चों को इस तरह से एक कुछ फॉरेन डेलीगेशन भी आया था, यहाँ पे करीब 20 मेंबर्स पर मुश्तमिल, हमने वहाँ पे एक अपना एग्जीबिशन लगाया वहाँ पे अपने बच्चों का जो उनके अपने स्टार्टअप है, वो बहुत ही ज्यादा उस हमारे उस इनिशिएटिव से खुश हुई। तो एक बेसिकली हमने एक नया इकोसिस्टम यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया हुआ है पिछले कई सालों से। इस तरह से हमने जो आज तक हम अपने फार्मर्स को सिखाते थे कि भाई आप खेती कैसे करोगे,
لیکن اب ہم اپنے فارمرز کو یہ سکھاتے ہیں کہ کھیتی سے آپ کو کیسے زیادہ فائدہ ملے, وہ کھیتی آپ کیسے کریں. وہیں چھِ أسۍ پننٮ۪ن فارمرن ونان تُہۍ چھِو وۄنۍ زمیٖندار سٲنۍ کینٛہہ, زمیٖندار فارمر کسان چھُو نہٕ کینٛہہ, تُہۍ چھِو وۄنۍ سٲنۍ چمپین فارمر. سُہ چمپین فارمر یُس پننِس زمیٖنس پٮ۪ٹھ, کم زمیٖنس پٮ۪ٹھ یونیورسٹی نئی ٹیکنالوجی نئی طریقے استعمال کر زیادہ فائدہ کماؤں. تو اس طرح کے ہم نے 100 چیمپئن فارمرز بھی یہاں پہ کلٹیویٹ کیے. میں آنیسٹلی بتاؤں گا کہ وہ ہماری کوئی اٹمپٹ آئسولیشن میں نہیں ہے, ہم نے کام کیا ہے جو ہمارے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ہمارا کسان بورڈ ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا کیا ہے. تو یہ جو منسٹری آف مائکرو اینڈ اسمال انڈسٹریز ہے, ان کو جو کانفیڈنس ملا ہے اس یونیورسٹی کو سپورٹ کرنے کے کئی ریزن ہیں. ایک بڑا ریزن ان کا یہ ہے کہ ابھی ہماری یونیورسٹی دیش کی 76 یونیورسٹی میں سے چوتھی سب سے بہترین یونیورسٹی ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ بھئی کشمیر جیسے حالات میں جو پچھلے 30 سالوں کی مشکل ترین حالات سے گزری ہے یہ ریجن, اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس لیول پہ پہنچے, اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں کی فیکلٹی ہے, جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو یہاں کی لیڈرشپ ہے, جو میرے سے پہلے یہاں پہ اس یونیورسٹی کے لیڈر آئے ہیں, ان میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی, ان میں ایک ریزیلنس ہے. تو دیٹس وائی وی اسٹینڈ ایز 4th بیسٹ اسٹیٹ یونیورسٹی. اس طرح سے جہاں انوویشنز کی بات ہو رہی ہے, میں بار بار آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو 76 یونیورسٹیز ہیں ان میں صرف ہماری یونیورسٹیز کو منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف انڈیا نے ریٹ کیا ایز این انوویشن اینڈ فارم یونیورسٹی. تو اس طرح کے یہ جو اچیومنٹس میں بدائی دیتا ہوں اپنے پروڈیوسر آفیسرز کو جنہوں نے یہاں تک لائے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی جو میری آج کل کی جو میری ٹیم ہے یہاں پہ آفیسرز کی, میں بدائی دیتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اپنی بہت ہی کمپیٹنٹ اور قابل فیکلٹی کو, اسٹوڈنٹس کو, جنہوں نے آج پورے دیش میں, پورے ملک میں یونیورسٹی کا نام اوپر کیا, اور اس سے ہماری پہچان اب گلوبلی ہو رہی ہے. وہ گلوبلی پہچان اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ہم نے اپنی یونیورسٹی میں سوچا کہ اب ہم انٹرنیشنل کیسے ہو جائیں. اب ہمارے کیمپس میں آنے والے دنوں میں جو بچے باہر کے دیشوں سے یہاں پہ کیسے آ جائیں, تاکہ ہم ایک ایسا ایک ملا جلا ایک کلچر یہاں پہ کریٹ کریں گے. ہم صرف ان کو ایگریکلچر نہیں پڑھائیں گے, یہاں پہ جو لوگ بچے یہاں پہ آئیں گے ہم ان کو یہاں پہ ایگریکلچر تو پڑھائیں گے, لیکن ساتھ میں ہم ان کو اپنی وراثت جو ہے, کشمیر کلچر جو ہے, ہمارا جو ٹریڈیشن ہے, ہم جس پر ہمیں بڑا فخر ہے, کشمیریت, جو ٹالرنس, جو لو, جو پیشنس, ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ زمانہ پرانا تھا جب یہاں پہ کچھ تھا, کچھ وجہوں سے ڈسٹربنس, لیکن we stand as a very distinct society who believe in love, patience, tolerance. اس میں وہ بھی ایک ہمارا ریزن ہے. میں چونکہ سمے کم ہے, وقت کم ہے, یہ بہت پھر رہے گا کہ ہم جو ہماری اس وقت گورنمنٹ ہے اور خاص کر ہمارے جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہے, ان کا جو سپورٹ ہمارے ساتھ رہا ہے, تو دیٹ ہیز بین مارولس سپورٹ. وہ جو HADP کا جو 5,000 کروڑ کا پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے اسی یونیورسٹی میں قریب 6 مہینے کی زبردست انتھک محنت کے بعد اور برین اسٹارم کے بعد وہ اپروو ہوا ہے, اور اس پروجیکٹ میں بھی آپ اس یونیورسٹی کو امپلیمنٹ کرنے میں کافی بڑا رول ہے. اور اس کے ساتھ میں ہم نے ایک اور پالیسی وضع کری ہے جس کا نام ہے ایگزم پالیسی, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی. وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو دی ہے, اور اس بدلے میں گورنمنٹ ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے. ہمارے پاس شبد نہیں ہے اس یونیورسٹی کے پاس میں کہ ہم آج کی جو گورنمنٹ ہے, ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر, جو ہماری پوری بیوروکریسی ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. میں ایک بار پھر سے زیادہ سمے نہیں لیتے ہوئے اپنے خاص مہمان جناب وکرمجیت سنگھ ان کا بھی ایک بار پھر سے شکریہ کرتا ہوں. حمید صاحب کا شکریہ کرتا ہوں, جو اپنے فائنانس سے ہمارے شفاعت صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت ہی پیوٹل پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ ہمارے بہت روز مسئلے ہوتے ہیں اور بنا آپ سے وہ مسئلے ہمارے سلجھتے نہیں ہیں. جاتے جاتے 2-3 باتیں ہی میں کہہ دوں کہ جناب وکرمجیت سنگھ صاحب, ہم اب اس یونیورسٹی میں ایک فارمل اسکول آف ٹریننگ اینڈ اسکلنگ لانا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 7 کالج ہیں. کوئی کالج ہے ایگریکلچر ہو گیا, فارسٹری ہو گیا, ہارٹیکلچر ہو گیا, ویٹرنری ہو گیا, سیریکلچر ہو گیا, انجینئرنگ ہو گیا. لیکن یہ جو ہم ابھی اسکلنگ اور ٹریننگ جو ہم کریں وہ آپ ڈوئنگ اٹ ان این آئسولیٹڈ مینر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک فارمل اسکول آف اسکلنگ اینڈ ٹریننگ ہو, جس کو ہم کالج آف ووکیشنل ٹریننگ بھی ہو سکتا ہے. اور میں اپنی گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس فورم سے کہ انہوں نے ہمارے لیے ساؤتھ کشمیر کے سالر علاقے میں 500 کنال کی زمین جو ہے اس یونیورسٹی کو الاٹ کری ہے.
तो हम चाहते हैं कि एक स्किलिंग और एक ट्रेनिंग स्कूल हम वहाँ पे एस्टैब्लिश करें। दूसरा हमारा एंडेवर है कि जो ये हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं बिजनेस करके, उनके लिए एक स्टार्टअप पार्क हम बनाएं। अब बच्चा जो यहाँ पे आया इस यूनिवर्सिटी में, उसने अपना आइडिया लगाया, हमने थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया, अब वो कुछ बना रहा है, लेकिन हमने उसको मजबूती देनी कि वो किस तरह से जो है ना एक स्टार्टअप पार्क में आगे अपने बिजनेस को ले जाएगा। तो उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, DPR। तो हम जनाब आपको साहब हम सपोर्ट करेंगे that you will just see it and analyze it and rate it at your own place। और तीसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो ये एक माहौल सा बना है, जो हमारे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम था, एक NHP प्रोजेक्ट में कुछ पैसा था हमारे पास, हमने बच्चों को इनोवेशन ग्रांट देना शुरू किया, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। हमने उनको बोला आपके दिमाग में जो भी ख्याल है उस ख्याल को, उस आइडिया को थोड़ा टेस्ट करो। उस थोड़े से इंक्यूबेशन और इनोवेशन ग्रांट की वजह से आज हमारे पास करीब 200 से ज्यादा पोटेंशियल आइडियाज हैं, जिनमें से हमारे करीब 20 स्टार्टअप्स बने हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपने इस समय में कि हमारी यूनिवर्सिटी में खासकर ये जो शफात साहब है, मेरे ख्याल में ये आप थोड़ा सा आपकी वजह से हमें मदद मिल जाए कि करीब 270 करोड़ इस यूनिवर्सिटी का बजट है सैलरी पे। तो ये तो नॉर्मल है जो आप हमेशा देते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक रिव्यू में एक इनोवेशन ग्रांट, ज्यादा नहीं 3-4 करोड़ का ही अगर हो जाता है, तो उस इनोवेशन ग्रांट से हम अपने बच्चों को, जो UG वाले बच्चे हैं, मास्टर्स वाले बच्चे हैं, PhD वाले बच्चे हैं, और मैंने यहाँ पे ये कहा कि इनोवेशन ग्रांट जरूरी नहीं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही बच्चा हो, कोई बाहर का भी हो, अगर उसके पास कोई पोटेंशियल आइडिया है तो वो हमारे पास आके हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि उसको एक बेसिक एक सीड बोलिए। हम अभी नजीर साहब यहाँ पे आ रहे थे, कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन चूंकि इस यूनिवर्सिटी के पास, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, हम लोगों को ट्रेन करते, लेकिन हमारे पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है, देयर आर गवर्नमेंट स्कीम फॉर दैट। तो शफात साहब, पिछली बार मैंने ये आइडिया मूव किया था, basically I will just call it as an investment for the future. If we want to really take this UTF Jammu and Kashmir forward, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको एक मॉडल बाय इकोनॉमी स्टेट बनाएं, और अगर हम इस बात को समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर कुछ है वो है एग्री बिजनेसेस का, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने अपने यूथ को इसके लिए तैयार करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 छोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी। मैं एक बार फिर से हारून साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उसने ये प्रोग्राम किया और यूनिवर्सिटी को एक पहचान दी, और विक्रमजीत सिंह साहब का भी शुक्रिया अदा करो, और मेरे जो सामने हमारे खास मेहमान यहाँ बैठे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है, और ये हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके फार्मर्स के साथ में। आपका एक बार फिर से शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much, sir, for your wise words. It's always enlightening to hear you, sir. This Nulreshi Hall has always been blessed with prominent personalities and resonated with their words of wisdom. And today we have with us our chief guest, Shri Vikramjeet Singh, Commissioner Secretary, Industries and Commerce, Government of Jammu and Kashmir. Sir, I request you to kindly share your words of wisdom. नॉर्मली चीफ गेस्ट सबसे लास्ट पे बोलता है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको रिवर्स करना पड़ा, बहुत एंगेजमेंट हुआ। Honorable Vice Chancellor, Squashed, Professor Vinay, other dignitaries on the dais, the dignitaries of the dais, all the people gathered here and associated with these trainings and the startup sector in Squashed. Very good afternoon to all of you. And I would say apologies for rushing this program a little bit, but I had some other prior commitments at Srinagar, and hence which I delayed a little, but then I had a commitment there also. So apologies for that. But I'd like to start by congratulating everybody at SCOS
especially Professor Ganai and all the faculty here for the wonderful work that all of you are doing for promoting entrepreneurship. And this launch today of the 550 training program is testament to that fact. I only met Professor Ganai only once earlier, and I was impressed by his vision and the work that he was doing, and that is why Professor Ganai reached out to me. I felt I must make time to attend this. I must also congratulate all the students here, and of course the faculty for the wonderful campus. This is the first time I've come to the campus here, and it's really wonderful. And I think in terms of facilities, in terms of the overall beauty of the place, at par with the rest of the universities that I have visited across the world. I mean that this is really a very nice campus. So you're all very fortunate to live here and study here. On the issue of entrepreneurship, I think what SQUAST is doing is very important, and I think this is one of the most critical areas in which SQUAST is working. And the reason for that is that if the UT aspires to double its GDP, then a lot of the heavy lifting will have to be done by the agriculture sector. And the reason for that is that at present about 17% of the state GDP is from the agriculture sector. However, if you note that about 70% of our population lives in the rural area, and that means that they are dependent on the incomes from the agriculture sector, and of course, I mean agriculture being the primary income source, and there would be other income sources in certain cases like handicrafts and all. But we cannot hope to improve the standard of living and to gainfully employ all our population if we do not drastically change the agriculture sector, and that can only be done by increasing the value addition in the agriculture sector, and for which entrepreneurship plays a very important role, and SQUAST as such plays an important role. If one looks at the agriculture sector in J&K, J&K is different from the other states that compared to other states, about 1/3 of the arable land is devoted to horticulture. But if one looks at the productivity of the horticulture output, that is about 2/3 of what the rest of the world can offer. And so that is a huge potential which one can easily realize, given that in terms of climatic conditions, there is nothing, I mean, J&K offers the best, particularly Kashmir Valley. And this is, and here I mentioned the productivity, not the other aspects of the realization to the from the investment or the work in the horticulture sector. And that increasing the productivity from the horticulture or the agriculture sector, agri-businesses, startups in the agriculture space, agri-logistics, the entire agri-value chain has a huge potential here. One, because the land is so rich, and two, because for many years those areas have been neglected. From the side of the industries department, we have recently initiated a number of steps to promote startups in terms of finance, and I believe the most important requirement of a startup
in J&K today, or the most important requirement of a business in J&K today is access to finance. So we have drafted the new startup policy, where we will provide seed grant for startups. That policy is in the approval stage. Hopefully, in the next month it should get approved. We have also initiated steps to make facilities available for startups and IT businesses. So there already a advertisement issued, and we have about 11,000 square foot of built-up space in Bangalore that we are offering for startups to come and set up over there at very reasonable rates. We have also reached out to Startup India, and we will be conducting a capacity enhancement program for incubation managers. There are 12 incubators in the state, and the idea is to improve their capacity so that they can work better and support the startups better and take them to the next stage. We also run our own entrepreneurship development programs, our own awareness programs. Our organization JKTPO does a lot of events. We have a separate program for women entrepreneurs. So all those we will continue to work hard, and we welcome all the startups here to partner with us, and we are more than happy to help them in any way. With respect to the Honorable Vice Chancellor's point on setting up a agri training institute, vocational institute, we would be more than happy to work with Squash on that. But my suggestion would be that it should be training and also agri-business, so that we look at all aspects of the entrepreneurship training. One area which I feel that we must work harder on is in the area of access to finance. And my suggestion would be that in the entrepreneurship training programs, here there should be greater focus on connecting the entrepreneurs here to sources of finance. And the reason for that is, if one looks at the data, the RBI data on state finances, and if you look at the per capita deposits in the state, so the per capita deposits in the UT of J&K are about 1,24,000 per capita. But there is a huge variation. So in some districts, the per capita deposits are as low as 30,000. And when you compare these per capita average UT per capita deposits with Punjab and Haryana, which are neighboring states, our per capita deposits are 2/3 of that. Again, when one looks at the credit flow to the UT, so credit flow to the UT on an average is about 80,000 per capita. Now, that is the national average per capita is about 240,000, 250,000. So the point that I am trying to make here is that there is limited surplus available in the hands of people. There is also, I think, there is also lesser credit flow here. So we must try harder to access finance, because at the end of the day, that is finance, as a colleague from the finance department will bear testimony to. So finance is what finally makes a business grow, and finance is what is most critical to the growth of the business. From our side, we are committed to working with and we will work with the Vice Chancellor and with everybody at cost to ensure that all entrepreneurs here are supported to
the extent possible. With those words, I conclude. Thank you so much. Thank you, sir, for your address and for being here today. As we move ahead with the event, I deem it a great privilege to invite our worthy Director Education and Dean Students Welfare, SCOST Kashmir, Professor M.A. Siddiqui sir, to kindly address the gathering. A very good afternoon to all of you. It is really difficult for me now to speak because a lot has been already said, and I think whatever had to be said on this occasion has already been transmitted to the audience. And but since I have been asked to deliberate on a few words on today's program, first of all, I would like to express my sincere gratitude for the organizers and giving me some time to share my ideas at this very impressive function of the launch of 550 training programs under MSME. I think I must congratulate first of all Dr. Harun, my colleague over here, and I have forgotten to just welcome all the dignitaries on the dais, off the dais, deans, directors, HODs, coordinators, and all the students over here. Basically, let me quickly put forth my ideas. The National Skill Development Policy has projected some interesting facts regarding skill development. And I would like to just share those facts with you. First would be that 62% of Indian population is in the working age group of 15 to 59 years. Second, more than 44% of the total population in our country is below 25 years of age. The third very important projection of National Skill Development Policy is that during next 20 years, labor force in the industrialized world is expected to decline by 4%, while in India it will be increased by 32%. 109.73 million additional manpower will be required across 24 key sectors. In this direction, Government of India has planned to set up 3,000 college-based, 1 national level, 30 state level, and 50 nodal entrepreneurship hubs in the country. With 3,000 crore per year credit guarantee fund for entrepreneurship development has been initiated by Government of India. Looking to the employment base, agriculture sector in 2013, it was projected at 240.4 million, which is expected to grow by 24.8%. Now let me share it with you that even in schools, as per the policy of Government of India, schools have to integrate skilling with formal education
from class 9 onwards. Given the realities of rapidly changing economic landscape of the country, entrepreneurship opportunities have emerged as an important source of meeting the aspirations of youth. Now regarding MSME sector is working very hard in this direction. However, let me share it with you that MSME sector contributes about 17% of GDP compared to 85% in Taiwan, 60% in China and 50% in Singapore. So we need to gear up. Question is, why at all the universities should encourage entrepreneurship? This is a question which some of my colleagues had put, that the university is already embarking on teaching, research and extension. Why at all should the university go for innovation and entrepreneurship? I have listed some 8 points which are very important insofar as the encouragement of entrepreneurship in universities is concerned. One would be fostering innovation. Students and faculty are encouraged to think creatively, which lead to innovative solutions to the problems. So whatever are the problems in the society, they need to have innovative solutions, and innovative solutions will come only if an innovative ecosystem is encouraged in the universities. Second would be the real world application. Students to get practical or hands-on exposure to run businesses. If we don't give the students the hands-on practices to run businesses, they cannot be innovative, they cannot be entrepreneurial. The third would be job creation. It is the responsibility of the society, the university, to create more job opportunities, and creation of an innovative and entrepreneurial ecosystem is the only way by which we can have more job opportunity creations in our region. Third would be skill development, promotion of critical thinking, problem solving, leadership qualities and risk management are very important, and this can be done only when we promote entrepreneurship in the universities. Fifth would be, of course, the economic impact. Sixth would be industry engagement. We need to engage industry with the university if we want to grow. Seventh would be global competitiveness. If we encourage the startup ecosystem in the university, we will definitely attract global talent, researchers and entrepreneurs around the globe. Eighth would be innovative ecosystem, which is so important for regional prosperity. Now the question is, what strategies should the university adopt for universities adopt? Since I understand we have limitations of time, the first would be, I will hurriedly go, I'll take another 2 minutes. Create entrepreneurship programs. Let me tell the audience and even our guests on the dais that we in the university have already initiated 60 odd short skill training programs in our curriculum. So we are training our students through those short skill training programs. And today the launch of 500 and odd training programs are an activity. Second would be incubators and accelerators. Establishment of on-campus incubators for students and faculty as well as alumni have been developed. We have developed SKIEE center over here. Then third would be seed funding. As our Honorable Vice Chancellor was saying, we are providing seed money for these startups.
Fourth would be access to resources, which would include co-working spaces, labs, libraries, and universities. Let me share with the audience that we have already sent our students and faculty to various countries on the global level. I don't want to just dwell on these. The second, we have made it imperative for our PG students to have a program in the sandwich mode, where they will have to spend at least more than 6 months in a university which is proficient in a particular skill. Fifth, we are also operating mentorship. Sixth, networking events. We are already on it. Then intellectual property rights and patent development. We have right now about 20 patents have already been filed by the university. Then interdisciplinary collaboration, industry partnership. We need to have industry partnership, and let me tell you that we have made some persons from industry as professors of practice in this university to encourage innovation and to encourage industry-university collaboration. Then very important is support for failures. We need to take failures as leading experiences. Even if our startups fail, we need to provide them, we need to continue to provide them funding so that one day they will succeed. The last would be global connectivity. As our Honorable Vice Chancellor said, we are now going global, and we have nearly 160 MOUs with global institutions. I would request dignitaries on the dais and off the dais to join me by giving a clap on the successes insofar as entrepreneurship and innovation successes have been achieved by us. Number one is that we have got 9 big BRAC awardees in the university. 7 RKVY, 1 Nidhi Prayas, 1 Type 2.0 grant, 1 Young Scientist Innovative Award, 2 Angel Investments, and 15 J&K Science Technology and Innovation Council Awards. Recently, I think Dr. Muzammil is here. He has got a BRAC grant of 60 lakhs, which is also very important. We have, this university has received 65 national awards in areas on innovation and startups. I would like to congratulate the leadership of the university as well as the competency of the faculty members and the interest which the students have put in to realize the dream of making this university an innovation-led university of the country. With these words, I thank you very much for listening to me patiently, though I spoke, I think, at a very odd situation when the chief guests and dignitaries have already left, but I still thought I must muster courage to say whatever I have to say. Thank you very much. Thank you very much, sir. May I now request Dr. Shafat Yahya, sir, Deputy Director of Finance Department, to address the gathering. Shabbat sir has joined into budget. I will introduce now myself. First of all, Ganai Sahab is not here. Respected Nazir Ahmed, Professor Nazir Ahmed Ganai Sahab, respected Harun Sahab, all the elite directors of this course, and professors and faculty members. A very good afternoon. Assalamu alaikum. I will now introduce myself. I am Shafat Yahya. I am Joint Director Budget. I look after the budget of J&K. Over the last 8 to 10 years, I am looking after the budget of J&K. The transformation which has been taking place,
I have witnessed to that transformation from so many years. Basically, I am a case officer of 2011 batch. So from 2011 I am in service. If I give you brief account, what has changed and how it has changed, so I want to discuss that thing. अगर हम बात करेंगे 2015-16 तक, अगर हम देखेंगे, मैं जब पहले बचपन में देखा करते थे, हम देखा करते थे एग्रीकल्चर सिर्फ गेहूं बाइयों का प्रोग्राम गुजरात, और हम देखते थे कि फैसिलिटेशन सेंटर्स होते थे, एक्सटेंशन सेंटर्स होते थे. एग्रीकल्चर का रोल हम यही देखते थे कि एग्रीकल्चर रोल इज कि फैसिलिटेट करना गांव के लोगों को और उनको सिर्फ टाइमली देना एडवाइस, कब वो दवाइयाँ देंगे, कब उनको ये अपना ये करना चाहिए, क्या कहते हैं, अपना जमीन कैसे वो खुदाई करते हैं, वो चीज़ें, यही गाइडेंस. बट लेकिन जब हम देख रहे हैं पिछले सालों से the real entrepreneurship in agriculture, it is because of you all, where the research which SCOS, our agricultural universities of J&K has done, it is because of these researches that we have seen transformation, and we are seeing entrepreneurs, we are seeing now FPOs in J&K. This is a revolutionary step. अगर मैं बात करूं, हमने as a finance, what we are providing you and what you are providing to the society. You are providing technology. If I say still there is technology is not that far right now, because there are various gaps in technology. We have to focus on technology now. क्योंकि technology में हम देखेंगे technology नहीं है. अभी हम improvement कर रहे हैं, research हो रही है, but we have high density research. देखिए high density आ गया, उससे agriculture में ये horticulture में revolution आ गया. This time J&K has 11 GI tags. J&K 11 GIs है J&K में alone. ये क्या कहते हैं, उसमें Mitsubishi राइस है, वो that is a GI, saffron है, वो GI है. तो these are all agriculture products. अगर हम देखेंगे agriculture में, horticulture में high density से revolution आया. अगर हम milk production की बात करें over the years, मिल्क प्रोडक्शन में भी हमने सब्सिडी प्रोवाइड की गवर्नमेंट की तरफ से, और मिल्क प्रोडक्शन वी आर नाउ सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन इन J&K. It is because of you only that I congratulate SCOS and especially Vice Chancellor of SCOS that we are now moving ahead in milk production. और अगर मैं आप बात करूँ ओवरऑल होलिस्टिक प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ओवर द इयर्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमी जो हमारी है J&K की इकोनॉमी ओवर द 5-6 इयर्स जो एग्रीकल्चर इन्वेंशंस हुई, जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसकी वजह से हमारी इनकम पिछले 5 सालों से बहुत बढ़ गई है, और अगले 5 सालों में हम एनविसेज करते हैं कि आवर इकोनॉमी विल डबल. और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम बजट बना रहे थे इस साल, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो फाइनेंशियल कमिश्नर भी थे, तो हम जब पार्लियामेंट में जा रहे थे बजट लेके, तो उस टाइम हम ले रहे थे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 5 साल का प्रोग्राम है, जिसका बहुत ही वाइटल रोल आप लोगों को प्ले करना है हमारी इकोनॉमी को डबल करने के लिए. तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जब हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हम बना रहे थे फाइनल स्पीच डिस्कस करना था, जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना था. ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी को जो करना था प्रेजेंट पार्लियामेंट में, तो एक दिन पहले हम बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला कि लगाओ जी कॉल लगाओ, नजीर साहब को कॉल लगाओ, वाइस चांसलर कश्मीर. तो हम परेशान हो गए कि मतलब अभी हम बजट बना रहे हैं, हम फाइनल कर रहे हैं, स्पीच फाइनल कर रहे हैं, तो क्या बात है. बोला जी नजीर साहब से मुझे बात करनी है. तो नजीर साहब से हमने बात की, उनको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने बात की, बोला कि मुझे बताओ जी इकोनॉमी हमारी, मुझे डेटा चाहिए जो जिससे हम इकोनॉमी डबल करेंगे. तो हम परेशान हो गए, इकोनॉमी कैसे डबल होगी जबकि अभी हम बजट बना रहे हैं, तो क्या ये ऐसा कुछ. उन्होंने बोला कि नजीर साहब ने स्कॉस्ट में रिसर्च की है और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी डबल करेंगे. और उसी दूसरे दिन हमने
पार्लियामेंट में बजट स्पीच में ये नोट है कि we will double our economy in next 5 years. This is where our institute is going, where our institute is developing our J&K. Entrepreneurship की बात मैं करूं, जो financial assistance हम over the years हम दे रहे हैं, उसकी वजह से भी entrepreneurship बहुत बढ़ चुकी है. आजकल अगर हम देखेंगे KCC credit cards we have saturated, everybody is provided KCC. हम फसल बीमा योजना उसमें बहुत सारे नहीं ले रहे हैं अभी बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर उतने कवर नहीं है. स्नो अभी कवर नहीं है उसमें, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्नो भी उसमें कवर हो जाए, तो उसका बेनिफिट अभी नहीं है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया इन 5-6 सालों में. इस फसल बीमा योजना की वजह से हर किसी को बेनिफिट मिल सकता है, इंश्योरेंस कवर मिल सकता है. और सब्सिडी स्कीम जो हमने की, फिर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, अगर हम देखेंगे कोल्ड स्टोरेज, हमारी जो प्रोडक्शन है एप्पल प्रोडक्शन आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, वो अराउंड 20 लाख मीट्रिक टन है जो हमारी एप्पल है. बट आवर कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटीज अवेलेबल है अभी वो 1.7 1.9 अब हो चुकी है टोटल लाख मीट्रिक टन. सो देयर इज अ ह्यूज गैप where your interventions are required, where your research are required. और मैं खासकर देख रहा हूँ कि फार्म मैकेनाइजेशन में हम अभी तक उतना डेवलप नहीं कर पा रहे, जहाँ पर अब रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए. और जो ये स्किल डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, आई कांग्रेचुलेट SCOST Kashmir that this opportunity has been given to SCOST Kashmir for starting this venture, this program, this 550 skill programs. Further, I would like to conclude with this, that SCOST has to play a vital role in doubling economy of J&K, in creation of FPOs, in generating surplus milk production and other milk products so that we can export those products. And SCOST has to facilitate our farmers, our new entrepreneurs. We as a government are facilitating everything. We have created ease of doing business. We are now registration process, we are easing out. We have made 1,000 more services online now, because we are seeing that we want to create employment opportunities and we want to create entrepreneurs, most particularly agriculture entrepreneurs, because we have a lot of potential here. Thank you. Thank you very much, sir. May I now request Mr. Abdul Hamid sir, Secretary J&K Kisan Board, for sharing his remarks. थैंक यू सर. पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SCOST कश्मीर का और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब का, जिन्होंने किसान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ J&K किसान एडवाइजरी बोर्ड, दैट मीन्स हमारे जो J&K के किसान हैं, मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हमारे बोर्ड मेंबर्स भी आए हैं. तो मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब डाइस पर हैं. हमारे फाइनेंसेस बड़े इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब थे, पहले यहाँ मैंने एक बार फाइनेंस की मीटिंग थी, तो he was representing on behalf of university for projecting the finances before Mr. Shafat Yahya. तो मेरा जस्ट सर यू विल bear me out, मैं 4-5 मिनट ज़्यादा भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसानों की बात आपके सामने ले रहा हूँ. तो फाइनेंस का बड़ा रोल है. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे पास हमारे ईमानदार अफसर हैं. ये शफात साहब, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ. शफात याहिया साहब बड़े ऑनेस्ट एंड डायनेमिक अफसर हैं फाइनेंस के, और इसका बड़ा रोल है. तो हमारी आने वाली मीटिंग है बजट की, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हम बना रहे हैं, और बजट एस्टिमेट्स 2024-25 भी हम बना रहे हैं. इसमें यूनिवर्सिटी भी बना रही है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सर कंपेयर करेंगे इस J&K को बाकी स्टेटों के साथ, हमारी टोपोग्राफी डिफरेंट है, हमारी जियोमॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, हमारी वेदर पैटर्न्स डिफरेंट है, तो हमारा लैंड यूज भी बहुत कम है. एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास बहुत कम है अगर हम बाकी स्टेटों को
कंपेयर करेंगे, मगर इट इज़ द एंड्यूर ऑफ हमारे वर्दी साइंटिस्ट कास्ट की, हमारी क्या वेरी फॉर्चुनेट एक पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो इनकी काविशों की वजह से वी आर 5th in agriculture in the country as per the नीति आयोग, ये उनका जो रिपोर्ट है, and we are 3rd in agriculture income after पंजाब एंड हरियाणा। और जो जब नजीर साहब ने इस यूनिवर्सिटी की भागदौड़ संभाली है एंड हमारे डायनेमिक साइंटिस्ट हमारे यहाँ HODs हैं, उनकी मेहनत और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसमें एक ही अम्ब्रेला में लिए गए हैं, सुकास्ट जो गैप्स थी वो रिमूव हुए हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स को एक ही अम्ब्रेला के अंदर दिया गया है, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट जो आपने अभी जिक्र किया है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी, यहाँ कंसीव हुआ है 5000 करोड़ का, तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। वो तभी मुमकिन हो सका है जब आप हमें ओपन हार्टेड हमें कल सपोर्ट करोगे। जो मैंने मीटिंग्स में देखता हूँ सर, अगर हम हेल्थ सेक्टर को यहाँ देखेंगे, हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ज्यादा एलोकेशन रखते हैं, R&D को देखेंगे उसमें भी ज्यादा एलोकेशन, वो तो सर्विस सेक्टर्स हैं, मगर जो ये एग्रीकल्चर है सर, अगर हम यहाँ देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे पास फिगर से करीबन 50,000 इंजीनियर्स जो घर में बैठे हुए हैं। यहाँ अभी आपने देखा है थॉपर इज नेक्स्ट IIT, थॉपर की सिविल इंजीनियरिंग IIT एट पार मानी जाती है। मैं खुद IIT रुड़की से हूँ, तो मैं इसलिए हमारा अभी एक ग्रेजुएट इंजीनियर आपने देखा है सिविल इंजीनियरिंग ऑफ थॉपर यूनिवर्सिटी इज एट पार विद एनी IIT ऑफ द कंट्री। तो आप देखो वो भी घर में बैठा हुआ है, उसकी भी मजबूरियां हो गई है, ही हैज चूजन नाउ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी सर एक ही यहाँ रे ऑफ होप है हमारी स्टेट में, दैट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि वी हैव रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लैंड कम है, अब जरूरत है उनको मैनेजमेंट करने की। वो मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारी यूनिवर्सिटी ने ये 550 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। अगर हम लेंगे यूरोपियन कंट्रीज को जिनका एरिया हमारे बराबर है, हमारे से कम है, मगर वो बहुत आगे है, लग्जमबर्ग है, हॉलैंड है, न्यूजीलैंड है, वो क्यों आगे है? क्योंकि दे हैव बेटर R&D, उनका R&D अच्छा है, उनकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी है, उनकी प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी है, उनका फाइनेंस सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें जरूरत है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें नंबर 1 जाना है, पंजाब और हरियाणा को पीछे धकेलना है, उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है, हमें इन साइंटिस्ट को एनकरेजमेंट करने की जरूरत है। और मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड बी इनवाइटेड, उनको लाओ अपने साथ, ताकि ये देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस में लास्ट मीटिंग में, इट वाज एम्ब्रेसिंग, द HODs फील एम्ब्रेसिंग पोजीशन देयर, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन देयर, बिकॉज़ इनको भी टाइटनेस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी टाइटनेस है। वी हैव अबाउट 2100 lakhs इस वक्त लायबिलिटी HEP फंड की, तो है इनकी भी एक बोटलनेक्स है, अपनी मजबूरियां हैं, मगर सर हमें आपको ओपन हार्ट सपोर्ट चाहिए। तो मीटिंग है तमाम एग्रीकल्चर को, खास कर तो एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर में आता है एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर और स्पेशली कास्ट। आप देखिए सर, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जब हम छोटे थे तो एक कैनाल में कितना हमें निकलता था प्रोड्यूस, 2-3 खार, हम उसको बोलते थे खार कश्मीरी में, इट इज 80 kgs इज कॉल्ड 1 खार, तो अबाउट 2 खार मींस 160 kgs हमें एक कैनाल से मिलता था। आप देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ these scientists, because of their endeavor, because of their hard work, because of their perseverance, because of their follow-up, because of their innovative ideas, we are now number 3rd in farmers income in the country. और हमारी 70% हमारा लैंड है कंडी एरियाज में, और सिर्फ 30% हमारा प्लेन है, और कंडी एरियाज में हॉस्टाइल वेदर कंडीशंस रहती हैं, पानी ही नहीं है, जम्मू में मंकी मेनेस है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं, but still we should appreciate the Sukast Kashmir, Sukast Jammu, जिन्होंने हमें इन हाइट्स पर दिया है। We are 3rd in agriculture income and 5th as per नीति आयोग, 5th in the country। तो मेरी सिर्फ यही है कि चूंकि आज मौका मिला है हमारे, ये he's a very honest and dedicated officer from finance, तो इसी का ज्यादा वहाँ रोल रहता है budget discussions में, he will help us out। तो मैं यही ये सुकास्ट को
मुबारकबाद देता हूँ जो ये 550 प्रोग्राम्स ये लॉन्च कर रहे हैं. इफ आई एम करेक्ट, ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कंसीव हुआ है 5000 करोड़ का, ये उसी का एक ऑफशूट है. आई थिंक उसमें रखा गया है. यही यहाँ जो एक मान्यवर कमेटी बनाई गई है जिसमें डॉक्टर मंगला राय साहब हैं, नजीर साहब थे, और खासकर सुकास्ट का उसमें बड़ा रोल रहा है. सुकास्ट साइंटिस्ट का जो मैं उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा, इट वाज वेरी मार्वलस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. कैसे उन्होंने बनाया था. वो बेसिकली हिज फ्रॉम बाड़ीपुरा, वो मेरा गाय है, हमसाया है उसका. मैंने जब देखा उसकी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नेचुरली दैट इज उसका आप साइंटिस्ट का उसका योगदान है. तो कैसे प्रिपेयर की गई है आपकी काविशों से वो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है 5000 करोड़ से. और हमारे ऑनरेबल जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी भी परसिवेशन रही, उसका भी फॉलो अप रहा. इतनी मीटिंग्स हुई है, रिकॉर्ड टाइम में वो यहाँ अप्रूव हुआ है. 5000 करोड़ उसमें टोटल एलोकेशन है. 1000 करोड़ हमें इस बार मिला है. तो मैं आपको रियली दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देता हूँ. और लास्ट 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ बोर्ड में कि सुकास्ट जो एक गैप थी डिपार्टमेंट के दरमियान, कहीं सुकास्ट अलग रास्ते से जा रहा था, एग्रीकल्चर अलग रास्ते से जा रहा था, एनिमल हस्बेंड्री अलग रास्ते से जा रहा था. तो टारगेट तो किसान है, मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ उन ऑफिसर्स का. यहाँ खासकर डुल्लू साहब थे, नवीन कुमार चौधरी साहब थे, उन्होंने इसको एक अम्ब्रेला में लाया. जो एक गैप्स थी उनको रिमूव किया, तो एक ही अम्ब्रेला में सारे डिपार्टमेंट्स को लाया. तो इससे क्या हुआ, किसान बोर्ड की कहीं आपको पता ही नहीं था किसान बोर्ड कहीं है. ये भी एक 2010 में बनाया गया है. तो आपकी एनकरेजमेंट से, खासकर नजीर साहब का, हमें प्रोफेसर नजीर साहब की एनकरेजमेंट रही बोर्ड को. ये एक्स ऑफशोर बोर्ड मेंबर भी है. तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो हम जो हमारे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनके घर पर जाते हैं, दहलीज पर जाते हैं अपनी दूरदर्शन टीम को लेके, उनकी अक्स वहाँ करती है, उनकी स्टोरी उनसे सुनते हैं, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसी इतनी तरक्की की. सर मैं आपके माध्यम से, हमने सांबूरा में एक बी कीपर है, ही हैज 800 कॉलोनीज. उससे मुझे दिल मोहम्मद मखदूमी साहब का जिक्र किया कि उसने मेरी हैंड होल्डिंग की. डायरेक्टर जो हमारे यहाँ एक्सटेंशन है, उनकी हैंड होल्डिंग से वो उस मुकाम पर पहुंचा था. और उसकी सर इनकम नेट प्रॉफिट 5 लाख है पर मंथ. मैं एक सीनियर लेवल ऑफिसर हूँ. 98 में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से है. अभी मैं 2.5 लाख से नीचे ही हूँ. अभी 3 लाख तो बात ही नहीं है, मैं अभी पहुंचूंगा रिटायरमेंट तक. तो ही इज 12th पास. मैंने उससे पूछा, यही सक्सेस स्टोरीज हम बना रहे थे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. उसने कहा सर मैं 12th पास हूँ. एक कनाल लैंड में 800 कॉलोनीज बी कीपिंग यूज किए. वो फिर उनको माइग्रेशन के लिए पंजाब लेता है. एंड उसकी नेट, उसके अपना स्टार्टअप किया है, उसका अपना ब्रांड है, वो हनी लकेशा हनी के नाम पर. तो उसकी पर मंथ नेट प्रॉफिट 5 लाख है. और उसको राउंड द ईयर 4-5 आदमी काम करते हैं. एक और सर हमने वहाँ एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, या परिहासपुरम है, हाई डेनेस्टी है. ये आपकी कोई काउशों से आया है. जब हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सुकास्ट ने काम किया तो हाई डेनेस्टी यहाँ आया. मैं खुद जिम्मेदार हूँ. हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल जो एप्पल ट्रीज थे वो बहुत बड़े होते हैं, तो ना उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बीमारियां भी उनमें लगती है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्वालिटी भी नहीं मिलती है. तो हाई डेनेस्टी आया. तो वह परिहासपुर में एक एंटरप्रेन्योर, एक जिम्मेदार है, उसने 20 कनाल पर वो बाग लगाया. तो उसने बोला सर मैंने कल कुछ सेब लगे थे अभी वहाँ, बोला कि सर मैंने 32 lakhs का उसके निकले थे 2000 क्रेट्स. एक क्रेट का वजन था 40 kgs. तो उसने 32 lakhs का वहां ही भेजा था, वहीं उसको व्यापार आया था कोई, तो वहां से उसने 32 lakhs का. तो आप देखो 20 canals of land, 32 lakhs. ये हम तसव्वुर भी नहीं जिम्मेदार कर सकता था. जिम्मेदार ये सोच ही नहीं सकता कि क्या मैं 32 lakhs निकालूं 20 कनाल से.
تو یہ صرف میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے سائنٹسٹ کو، خاص کر سکاسٹ کو، آپ کی کوشش سے یہ ہوا ہے، یہ پاسبل ہوا ہے. تو آج تمام کسان بورڈ کے پاس زمیندار آتے ہیں، سر ہمیں کب ملے گا ہائی ڈینسٹی، ہمیں کیسے ملے گا ہائی ڈینسٹی، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسی رجسٹریشن کرنی ہے. تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، بس میں اپنی ہی فیڈ بیک جو ہم یہ سکسیس سٹوریز بناتے ہیں. اور میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہوں بورڈ کی طرف سے، سر جو یہ نون چائے کا جو یہ آپ نے اسٹارٹ اپ کیا ہے، ہم نے سکسیس سٹوریز میں ہمیں 52 سیکنڈز فری ملتے ہیں ایڈورٹیز چلانے کے لیے. تو یہ میں ایڈورٹیز اس کا ویڈیو اگر مجھے ملے گا، یہ میں ڈیلی 7:30 بجے شام یہ نشر ہوتا ہے ہمارا پروگرام سنڈے کو. یوز ٹیلی گونگر سی کرا، یہ میڈم جو ڈاکٹر نصرت ہے، یہ میرا فون نمبر میں اس کو شیئر کروں گا، یہ مجھے اس کا یہ شارٹ ویڈیو دے گا. اس میں نذیر صاحب نے کہا کہ اس میں کشمیری میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک میں طلال جہانگیر ہمارے دوردرشن میں ہے، آئی ول یوٹیلائز ہز سروسز. تو میں اس کو یوٹیلائز کر کے اس میں بیک اینڈ میں کچھ میوزک یا کچھ کوشش کروں گا. تو یہ میں سر اٹ از اے پرومس، میں یہ اگر مجھے ملے گا آج ہی ملے گا تو نیکسٹ سنڈے کو میں آپ کو سر اس کا لنک بھیجوں گا کہ یہ چلے گا. یہ شور ہے انشاءاللہ. میں بیسیکلی میکینیکل انجینئر ہوں مگر زمیندار ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر میرے سے کچھ زمینداروں کو فائدہ ہوئے، اپنی کمیونٹی کو آئے گا، تو وہ صرف آپ کی وجہ سے مبارکباد دوبارہ دینا چاہتا ہوں. تو سر مجھے یہ اگر یہ ویڈیو شیئر کریں گے، آئی ول ایڈٹ اپ اینڈ نیکسٹ سنڈے میں 7:30 بجے شام کو ہی چلے. اور اگین میں شفاعت یحییٰ صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آنے والی بجٹ میٹنگ ہے تو اسپیشلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، بورڈ کو نہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، شیپ ہے، اینیمل ہسبنڈری، اور خاص کر سکاسٹ کا، کیونکہ سر میں نے ہی واز ڈائریکٹر پلاننگ اس وقت، تو میں مجھ سے نہیں رہ گیا جب وہ ہی واز پروجیکٹنگ، اس سے بڑی وہاں اٹ واز 3-4 سال پہلے. تو ہی فیس امبریسمنٹ، کیونکہ فائنانس والوں کی لینگویج ڈفرنٹ ہوتی ہے اس وقت. تو اسی لیے میں ان کو تھینک یو سر. السلام علیکم. لیکن آج کی تاریخ میں ہم پورے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو ہے بہت ہی آبھاری اور شکر گزار ہیں کہ جو مطلب کھلے دل سے یونیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے بھی کچھ کوشچن پوچھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، سوال پوچھیں لیکن دے سپورٹ. Thank you, sir, for your remarks. Before we enter the last segment of our event, there is a beekeeper in our audience, very enthusiastic and very vibrant, who wants to thank Scotch Kashmir MSMEs for his launch. So for the same, may I call upon Mr. Imtiaz Qurashi on the dais, please. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈسٹرکٹ گاندربل کے بلیوار علاقے میں رہتا ہوں. میرا نام امتیاز احمد قریشی ہے اور میں شہد کی مکھیاں پالتا ہوں. میں جب پہلا لاؤ آج میں نے بنایا 2007 میں، تب مجھے پہلا سوال آیا ایمپیسیرانا کا. تو مجھے بہت شوق ہوئی شہد کی مکھیاں پالنے کی. تب سے میں ساتھ میں پڑھائی چلتی تھی اور پھر 2015 میں نے گریجویشن کی آرٹس کا میں اسٹوڈنٹ تھا. پھر جب گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے بہت ایگزام دی لیکن سکسیزفل نہیں ہوا، جاب نہیں ملی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے پیشن پہ فوکس کیا. پھر میں اس کاسٹ کے سے جڑا یہاں پہ، تو پھر میں نے یہاں پہ ٹریننگ لی. اس کے بعد میں نے اپنی بی کیپنگ کی جرنی شروع کی. میں نے سائنٹیفک ہائی پہ کام کرنا شروع کیا. میرے پاس ایک ہی کالونی تھی ٹریڈیشنل، اس کو میں نے سائنٹیفک پہ ٹرانسفر کیا. اس کے بعد آج الحمدللہ میرے پاس 90 کالونیز ہیں جس سے میں اچھی ارننگ کر رہا ہوں، اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوں اچھے سے اور دوسروں کو روزگار بھی دے رہا ہوں. اور میں جو بی ہائر ہیں اپنے وہ میں خود گھر پہ بناتا ہوں، جس میں بروڈ چیمبر ہے، سپر چیمبر سارے خود بناتا ہوں سرانے کی. اور پروڈکٹیو کالونیز پہ کام چل رہا ہے ہمارا یہ بی کیپنگ سرانا پہ، جس میں جو کالونیز زیادہ پروڈکشن میں زیادہ شہد ہے اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اور آل اوور کشمیر میرا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو جوڑا، 300 سے 400 لوگ ہیں.
हर एक बंदे के पास इस टाइम 8 से 10 कॉलेज है सिरा में, क्योंकि मैं लिख रहा यहाँ पे सब कीपर को नहीं कर सकते मैं लिख रहा क्योंकि इसकी माइग्रेशन करनी पड़ती है। और जो सिराना है ये स्टेशनरी बी कीपिंग है, इसको घर पे ही पाल सकते हैं हम एक जगह पे। तो उसमें 400 लोग हमारे ग्रुप में, उसमें हर एक बंदे के पास 8 से 10 कॉलेज हैं और सब अपना अपना बिहार खुद बनाते हैं, क्योंकि हम उनको सिखाते हैं कैसे क्या करना है, वो सारे खुद करते हैं। क्या नाम है आपका? इम्तियाज। हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं इम्तियाज के बारे में। जब कुछ आता है ना, मतलब किसी भी रियासत में किसी भी मुल्क को कुछ नया, तो सभी लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी हमारे बी कीपर्स है, उनके पास जो हॉनी बी है वो एपिस मैलिफेरा है। वो बाहर से हमने यहाँ मंगवाई है एपिस मैलिफेरा, वो यहाँ की हॉनी बी शहद की मक्खी नहीं है। और उसकी वजह से ये हुआ कि एक उसको बोलते हैं मानो कल्चर, सभी लोगों ने एपिस मैलिफेरा रखना शुरू कर दिया और वो जो अपनी जो हॉनी बी है शहद की मक्खी है, लोग उसको भूल गए एपिस राना। मैं इस बच्चे को क्रेडिट देता हूँ कि ये न सिर्फ अपने लिए रोजगार से बनाया और औरों के लिए मतलब थ्रू हॉनी, लेकिन ये एपिस सिराना जो हमारे लोकल कश्मीर की अपनी हॉनी भी है, ये उसको कंजर्व कर रहा है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप इसको इसलिए भी मुबारकबाद देंगे कि जो एपिस मैलिफेरा का जो एक बी हाइव से जो यील्ड निकलता है, हॉनी निकलता है, उसी के बराबर का इस एपिस सिराना में भी हॉनी निकलता है। उसका हॉनी का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर है और उसको मैनेजमेंट भी आसान है। सिचुएशन पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इसको हमको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, और उस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमारा जो अपना रिसोर्स है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमने उस रिसोर्स को भूलना नहीं है। बहुत बहुत मुबारक, बढ़िया। Thank you, Mr. Imtiaz, and congratulations for taking your passion and also conserving the indigenous species. ये हमने करना था, लेकिन ये लड़का कर रहा है। Thank you very much. As we near the end of the event, let this ceremony serve as a reminder that skill development and entrepreneurship are not just events but lifelong journeys. As we come to the end, I would request Professor Shakil Ahmed Mir, Coordinator IQAC, SCOST Kashmir, to present vote of thanks. Assalamu alaikum and very good noon all of you. Dignitaries on the dais and off the dais, I consider it my privilege and honor to present the vote of thanks on behalf of Directorate of Planning and Monitoring, the organizer of the event. I sincerely express our gratitude to the Chief Guest, Sri Vikramjit Singh, Commissioner Secretary, Industries and Commerce, JNK government for gracing the occasion. There are no words to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Ganai, who is always leading from the front, a leader for excellence, whose innovative ideas have led to the addition of entrepreneurship as an important mandate of this foreign university. Be it internalization of education design model for the National Education Policy 2020, startup and innovation policy for holistic agricultural development policy, exam policy, internationalization of One Health and cost A, and the list goes on. We thank you, sir, for transforming our vision and mission and for everything that we are today. We wholeheartedly thank Mr. Yahya, Deputy Director Budgets, Joint Director Budgets, Mr. Abdul Hamid, Secretary Kisan Board, for gracing this occasion. Special thanks to the Director MSME in Srinagar, Mr. Sahil Alakwan. Sir, you took a keen interest in making these trainings happen. I thank Dr. MACD, our worthy Director of Education, and Dr. Harun and all officers of the university, coordinators of the MSME training 2023-24, coordinators of training 2022-23, doing a great
jobs in skilling youth, graduates, farmers, and so on in various trades of high entrepreneurial potential, trainees of last year's MSc, ME skill programs for sharing their valuable inputs and trusting us as a leading foreign science university in the country that is marshalling all resources for doing best for the farming community and the society. I thank all those who have contributed in making this event a great success. I thank the press and the media for covering the event for the greater dissemination of the message that Sukhas Kashmir is working hard to transform society through a shift from traditional farming to commercial agriculture and the development of generic human resources and circular workforce for driving agriculture 4.40. Thank you one and all. God bless us all. Thank you. Once again, a heartfelt thanks to each and everyone present. We'll now be proceeding for lunch at Villa Willows.